my dear participants here, I am not here to teach on any topic, but surely I'm gonna use this opportunity to have a wonderful discussion on the psychology of coaching from a different perspective, because I know that all the participants here are well experienced. You have ample amount of experience of working with the teams, with the sports teams and all. Surely it will be very helpful if I can create a good discussion out of it. And yes, as I just mentioned, today's topic is psychology of sports coaching. Now, many of you have given their mixed reaction about the Bloom's taxonomy. Some of you are very familiar, some of you are not familiar, some of you want to get familiarized with it. Now, today we're gonna ask one major question: is our athlete creative? When we ask the question, is our athlete creative? Most of the time, the question comes that our our athletes are talented. Our athletes are skillful. Our athletes are fit, but are our athletes creative? Most of the time when we ask this question, we see the answer in different ways, as you just mentioned. But when we talk about creativity, it's always a challenge. Now, the question is that if you take the research of the top class athletes, athletes need to be innovative. Athletes need to be creative. Now, can we help our athletes to be creative? That is the question. If you take about any sport, if you talk about any world-class athletes, they are strong, they are fit, they are skillful. But what makes them the champion, what makes them cut apart from the rest is about the creativity, about the innovation, about the newness, the freshness which they bring out in execution of the skill and which reflects in their performance. Now, the question is that if this is so important, if it is so important for our athletes to be creative, can we help our athletes to be creative? And yes, how can we do it out? With this, another question is that most of you here in this session might be thinking, why do we need our athlete to be creative? Is talent not enough? Is being skillful not enough? Is being fit not enough? Is the combination of skill and fitness not enough? The need for the cognitive aspects, the need to be creative, whether it is about in terms of creating space along with the movement, whether it is about playing with a 360-degree vision, wherein the focus should not be on the ball, but the focus should be on the bigger picture, and whether it is about being relaxed, being calm while playing the football, and how can this be done? Now, this is the agenda, because one more statement which you might have heard during the session is that, which is our base today, before you get on top of the tree, you have to go through the branches. आपको पेड़ की चोटी पे चढ़ने के लिए ब्रांचेस को क्रॉस करना ही पड़ेगा. इसी मॉडल को बेस रखते हुए आप देखेंगे उसी तरीके का एक ट्री है यहां पर. इस ट्री के अंदर अगर हम ध्यान से देखें, हम बात रख रहे हैं हमारा प्लेयर क्रिएटिव हो, हम भी चाहते हैं. एंड टू reach this top of the tree, you have to cross through all these branches. Now, this is what the objective of the session. ये आप देखेंगे खासकर इवन जो आईबी करिकुलम के अंदर पी प्रोग्राम्स हैं, अगर आप कभी चांस मिले, मौका मिले, आप जरूर देखिएगा. उसके अंदर फिजिकल एजुकेशन के अंदर जो है स्कूल लेवल के अंदर भी काफी इसी कॉन्सेप्ट को रख के चलाया गया है. कैसे हमें अपने एथलीट को क्रिएटिव रखना है, कैसे हम अपनी कॉग्निटिव डायमेंशंस को इंप्रूव कर सकें, और साथ ही साथ हम कैसे नॉलेज डायमेंशन को इंप्रूव कर सकें. बहुत इंटरेस्टिंग होगा. आप में से बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स होंगे जो कि कभी
क्वेश्चन पेपर सेटिंग्स के अंदर भी कभी इवैल्यूएशन सिस्टम के अंदर घुसे होंगे, वहां पे आपने इन कॉन्सेप्ट्स को कभी देखा होगा श्योरली। ये सभी है कॉग्निटिव डायमेंशंस। लेकिन मेरा ये सेशन कॉग्निटिव डायमेंशन के साथ साथ नॉलेज डायमेंशन को भी ऐड करते हुए बात रखने का है। I'll put my whole effort, the best efforts to place this in the concept of sports. हम बात कर रहे हैं हमारा एथलीट जो है क्रिएटिव रहे। लेकिन वो हमारा एथलीट क्रिएटिव कैसे रहेगा जब हमारे एथलीट ने कभी उन सिचुएशंस को कभी फेस ही नहीं किया। हमारा एथलीट क्रिएटिव कैसे रहेगा? हाउ कैन आवर एथलीट बी क्रिएटिव व्हेन द एथलीट हैव नेवर बीन पुट इनटू अ चैलेंजिंग सिचुएशन? How can our athlete be put into a challenging situation when the athlete have never got an opportunity to participate? Now, to participate also, you need to develop the basic understanding of the skills. So, हमारा जो विषय है डिस्कशन का, वो बेस से, ब्रांच से शुरू होता है। पेड़ की चोटी पे पहुंचने के लिए हमें शाखाओं से गुजरना पड़ेगा, शाखाओं को पार करना पड़ेगा। और ये आपके सामने जो दिख रही हैं ये शाखाएं हैं, जिसकी सबसे नीचे की शाखा को हम बोलते हैं रिमेम्बरिंग, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग, उसके बाद एप्लीकेशन, फिर एनालिसिस एबिलिटीज, फिर इवैल्यूएशन स्किल्स, और उसके बाद आती है शिखर, चोटी, टॉप ऑफ द ट्री। यू कैन रीच टॉप ऑफ द ट्री, दैट इज टू बी क्रिएटिव। Now, that means when we talk about sports, we talk about any sports, it's very, very important that we should put multiple skills, we should add multiple skills to the athletes. Because we do conduct training. The athlete is into regular training. We believe that he is into fantastic training. But does he remember those skills? It is just like आप किसी को इंग्लिश बोलना सिखा रहे हैं या कोई और अन्य भाषा सिखा रहे हैं और उसके पास वोकैबुलरी ना हो। जब उसके वोकैबुलरी की प्रॉब्लम होगी तो वो कैसे एक लंबे सेंटेंसेस को लिख पाएगा, बोल पाएगा, या पैराग्राफ लिख पाएगा, या ऐसे को लिख पाएगा। यहां पे खेलना तो एक ऐसे लिखने के बराबर है, और ऐसे लिखना बिना अक्षरों के, बिना शब्द बनाए कैसे हो पाएगा? यहां पे रिमेम्बरिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जहां पे हमें एथलीट को वाइड वैरायटी ऑफ स्किल्स को देना चाहिए। और सिर्फ स्किल्स देने से काम नहीं चलेगा, उनकी अंडरस्टैंडिंग देने की उनको बहुत जरूरत है। जब उनकी रिमेम्बरिंग और अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आएगी, उसके बाद उन स्किल्स को बच्चों को, एथलीट्स को इंप्लीमेंट या अप्लाई करने का एक्सपीरियंस देना बहुत जरूरी है। दैट इज वाई वी ऑलवेज फोकस दैट इन मोस्ट ऑफ द ट्रेनिंग सेशन स्मॉल साइडेड गेम्स का होना बहुत जरूरी है, लीड अप गेम्स का होना बहुत जरूरी है, रिक्रिएशनल elements are very, very important, wherein those aspects which were the outcome of the session should be tested into it. The friendly matches or friendly competitions are again very important part, wherein you are providing the athlete an opportunity to apply what they have remembered and understood during the training sessions. Because once they start applying it into the practical training sessions, then the another challenge for the teachers and the coaches and the trainers is to help the athlete analyze it out. Now, analysis skill is again a higher order skill. To push the athlete towards the higher order skills, we have to develop their analytical abilities. And when we talk about developing the analytical abilities, we are talking about when the session is being conducted, when the athlete is given ample opportunity to apply those skills. The athlete should be able to differentiate it out. The athlete is able to classify it out. The athlete should be able to categorize it out. That is very important. Because after the skill, आपने आज क्या किया? What did you do? I did passing. I did pass and receive. I did dribble and shoot. That's okay, fine. But
Is he able to, if the athlete is able to analyze it out, what are the different phases of dribble, what are the different phases, what are the different actions, what are different elements? Because if the athlete is able to differentiate, if the athlete is able to discriminate, if the athlete is able to distinguish, if the athlete is able to categorize, if athlete is able to compare, athlete is able to correlate, it helps the athlete venture into the next higher level is the evaluation skill, wherein athlete एक क्रिएटिव एथलीट होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है टू बी अ क्रिएटिव एथलीट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इज कैन द एथलीट is the athlete capable of understanding what is right and what is wrong? Is the athlete able to identify the errors and mistakes by himself or with the support of his teammate or with the support of their coach or the trainers? जजमेंट एबिलिटी कितनी स्ट्रांग है? जजमेंट एबिलिटी स्ट्रांग तभी हो पाएगी जब हम एथलीट्स को एनालिटिकल स्किल्स डेवलप करेंगे, और एनालिटिकल स्किल्स तो तभी हो पाएगी जब एथलीट उन स्किल्स को अप्लाई करेगा, और अप्लाई तो तभी हो पाएगा जब आप वाइड वैरायटी ऑफ स्किल्स एथलीट्स को देंगे ट्रेनिंग सेशन के अंदर. दैट मीन्स यहां पर हम जब बात करते हैं हायर ऑर्डर स्किल्स की, सिर्फ ट्रेनिंग में स्किल्स कराना इंपॉर्टेंट नहीं है. स्किल्स कराकर उनको एनालिटिकल स्किल्स, इवैल्यूएशन स्किल्स की तरफ लेके जाना है. इसके लिए हमें उनसे स्किल्स के बाद ट्रेनिंग एप्लीकेशंस का मौका देने के बाद पूछना चाहिए, आपको पिछले सेशन में और इस सेशन की स्किल्स के एग्जीक्यूशन में कितना डिफरेंस आया, कौन सा बेटर है, किस तरह का चेंज दिखा, डिफरेंसेस कहां किस तरह की थी. That is, the athlete is able to distinguish the previous skill, distinguish the same skill, or categorize the same skills into multiple parts, or correlate various other small aspects into a larger part. जब ये होगा, इसका हायर ऑर्डर स्किल में आप उसको हेल्प आउट कर रहे हैं, जहां पर एथलीट इवैल्यूएशन स्किल्स, इवैल्यूएटिव एबिलिटीज डेवलप करेगा, जहां पर जो है एथलीट जजमेंट एबिलिटी डेवलप करेगा, जहां पर एथलीट सही और गलत की पहचान कर पाएगा. और यहां से जब ये एस्पेक्ट, जब इवैल्यूएशन स्किल्स डेवलप होंगी, आप देखेंगे एथलीट जो है क्रिएटिविटी की तरफ आपको रिफ्लेक्शंस देना शुरू करेगा. एथलीट जब किसी कंडीशन, एक सिचुएशंस में आएगा, तो वो अपना खुद का जजमेंट ले पाएगा, अपना खुद का एक नया सोल्यूशन क्रिएट कर पाएगा, अपना खुद का एक सोल्यूशन क्रिएट कर पाएगा, प्रोड्यूस कर पाएगा. बहुत बार शायद आप में से बहुत सारे पार्टिसिपेंट मेरे से सहमत भी रहेंगे, मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स विल एक्सेप्ट to my thought process also. What happens when we go with the team along and during the matches, what happens, we keep shouting at them that what are you doing, you should have given the pass instead of a dribble, or you should have why you did not dribble, you should have gone for the dribble, it was simple, there was no one in front. But the athlete looks at your face and he says that during the whole training session, you have never allowed me to dribble. You have always asked me to pass and pass and pass. You never allowed me to to do something which I like. You have never allowed me to test something new. You have never allowed me a space to do the thing which I feel it may be possible. You have never given me a freedom. Now today, on the day of the match, when a situation arises, you're asking me to do something which I have never done in the practice. आप मेरे से एक ऐसा काम करने की बात करें जो मैंने जिंदगी में प्रैक्टिस में कभी आपने मुझे परमिट ही नहीं किया. दैट मीन्स आप सब शायद समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं. हमने एथलीट को ट्रेनिंग के समय ही सोचने का मौका नहीं दिया, सोचने का स्कोप नहीं दिया, सोचने का इंडिपेंडेंस नहीं दिया, और हमारा एथलीट कैसे क्रिएटिव हो पाएगा? ये इसीलिए हम इस लोअर ऑर्डर थिंकिंग से हायर ऑर्डर थिंकिंग का जो प्रोसेस है, जो जर्नी है, इसको हमेशा कॉग्निटिव डायमेंशंस की बात करते हैं. कॉग्निटिव एबिलिटी टू थिंक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ कॉग्निटिव डायमेंशन को चेंज करने से
आपको एक क्रिएटिव एथलीट नहीं मिलेगा। कॉग्निटिव एथलीट्स को चेंज कर साथ साथ कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स डेवलप करने के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट है, हम जो हमने बात रखी अभी रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, इवैल्यूएशन और क्रिएटिविटी के साथ हम एक और इंपॉर्टेंट डायमेंशन नॉलेज डायमेंशन को भी इंप्रूव करें।